तो नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू अपनी यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो, वीडियो ने लाइक करजो और तमारा मित्रों जोड़े वीडियो ने शेर पण करजो, जेथी करीने एमने पण माहिती मळी रहे। तो मित्रों, हाल जे चालू जे एलआरडी नी जे भरती है ये भरती पूर्ण थवा आवी छे। आ भरती में घणा ने आ जे 40% वाली सिस्टम थी क्यांक ने क्यांक नड़ी है। विभाग एम सारा एवा स्कोर थतो होय तो विभाग बी में जे 40% क्राइटेरिया तो ये फिलअप न थतो हो एटले विद्यार्थी फेल थयेलो होय। एवुं ने एवुं उल्टू भी थाय छे। विभाग बी में सारो एवो स्कोर कर्यो 90 जेटलो स्कोर करी नाख्यो होय, पण विभाग एमां जोवा जाय तो एमां ए सारो एवो स्कोर करी शक्यो ना होय। जे 40% नो क्राइटेरिया छे 32 मार्क वाळो ए भी पूरो फिलअप ना करी शक्यो होय, एना कारणे ए विद्यार्थी फेल थाय छे। હવે આમાં વિદ્યાર્થી ડિમોટિવેટ ક્યારે થાય છે કે દોઢ વર્ષ જે વિદ્યાર્થી હોય તૈયારી કરી હોય 1 થી 1.5 વર્ષ એ લોકોને એમ થાય કે ભાઈ આપણે જે અત્યાર લગી તૈયારી કરી એ બધી ખોટો ટાઈમ વેસ્ટ જ થયો એમ। પણ મિત્રો એ ટાઈમ વેસ્ટ નથી ગયો, કારણ કે બેક ટુ બેક જે ભરતીની વાત કરવામાં આવી હતી, જ્યારે આપણું રનિંગ શરૂ હતું ત્યારે હાઈકોર્ટનો એક સુવો મોટો લગાડવામાં આવ્યો હતો। તો એ મિત્રો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને ફાયદો મળશે આજે તૈયારી કરી છે એનો, कारण के नवुं जे अपडेट आव्युं छे हाईकोर्ट द्वारा जे नवुं जे अपडेट आव्युं छे ए अपडेट प्रमाणे बीजा तबक्कानी जे जाहेरात करवानी छे ए ऑक्टोबर के नवेम्बर में थशे। एटले मित्रों आवता 10मा महीनामां अथवा 11मा महीनामां जाहेरात फरीथी थशे आवनारी कोन्स्टेबलनी अने पीएसआईनी। भरती वहेली थाय तो एमां कांई नवाईनी वात छे नहीं, कारण के हाईकोर्टनो जे सुवो मोटो लगाडवामां आव्यो छे, सुवो मोटो एटले ए लोकोने भरती करवी ज पड़े टाइम प्रमाणे। आ जाहेरात करे एटले गणी लेवानुं 1 वर्षनी अंदर भरती थई जाय छे। एटले जाहेरात जो आवता 10मा महीनामां के 11मा महीनामां आवशे तो 1 वर्षनी अंदर भरती कम्प्लीट थई जाय छे। पण हाईकोर्टमां ए लोकोए जे एफिडेविट जमा कराव्युं छे એ રીતે 2026ના સપ્ટેમ્બર મહિના સુધીમાં આખી ભરતી ક્લિયર કરવાની વાત કરી છે એ લોકોએ। કદાચ એ ના બી થાય તો પણ આ બેક ટુ બેક જે ભરતી આવે છે એનો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને ફાયદો થશે, કારણ કે તમે લોકોએ એક થી 1.5 વર્ષ તો અગાઉ તૈયારી કરી છે। તમારે માત્ર ને માત્ર રિવિઝન કરવાનું છે, અને રિવિઝન જ એક એવી વસ્તુ છે કે જે આપણને પાસ કરાવી શકે, मेरिट में नाम लावी शके अने सारा एवा स्कोर साथे नाम लावी शके। एटले मित्रों बेक टू बेक भरती फाइनल आववानी छे। जे विद्यार्थीओए तैयारी करी छे ए पोतपोतानी रीते जे कांई टाइम मळतो जाय ए रीते रिविजन करता रहेजो। पछी आमां एवुं थाय के थोड़ोक टाइम ए तैयारी मूकी दे तो ए बधुं पहेलेथी एकड़ो घूंटवो पड़े, ए करતાં થોડું શરૂ રાખજો મિત્રો।